नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है आज ट्रेडर हब। और यहाँ पे हम लोग हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में या फिर स्टॉक मार्केट के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करते रहते हैं। और हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर किरण सर हमें हमेशा नए नए कंसेप्ट के बारे में सिखाते रहते हैं। तो आज भी हम लोग सिखाने वाले हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स मास्टर कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में। हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर किरण जी हमारे साथ है और आज वो हमें सिखाने वाले हैं कि आप कैसे अपने फाइनेंशियल गोल मास्टर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल गाइड वो हमें देने वाले हैं अपनी वेल्थ बिल्ड करने के लिए। किरण जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग तेजस एंड वंडरफुल। बहुत अच्छा टॉपिक चुना है हमने आज के लिए। मेरे हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि गोल्स के बिना हमको मालूम नहीं पड़ता है कौन से डायरेक्शन में जाने का। तो गोल सेटिंग इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप बिफोर वी डू एनीथिंग। और वेल्थ बिल्डिंग के मामले में it is no different. So wonderful topic and I'm looking forward to this episode. डेफिनेटली किरण जी, हम लोग पिछले 12 एपिसोड में बहुत कुछ सीख चुके हैं आपसे। और स्टॉक मार्केट के बेसिक के साथ साथ आपने बहुत सारे फाइनेंशियल कंसेप्ट भी हमें सिखाए थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग पूरा फोकस करेंगे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के बारे में, या फिर उसके बारे में जो भी कंसेप्ट है वो हम लोग सीखेंगे। अब जैसे कि हम लोगों ने साइमन सिनेक के एक वीडियो में सुना था कि सबसे पहले तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए कोई भी गोल अचीव करने से पहले। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारे फाइनेंशियल गोल अगर हमें 2025 में अचीव करने हैं तो उसके लिए हमारा वाई डिफाइन करना कितना क्रिटिकल है हमारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए, और हमारे सक्सेस के ऊपर वो कैसे इम्पैक्ट करता है। प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। Very important point. Most of the people when they think of setting their financial goals, they would make a very vague statement that I want to make more money. But the question to be asked here is how much, by when, and for what purpose. So these are the three things which all of us should have clarity, and without this clarity, so basically this is a why of the whole process. तो अभी ये why कैसे define करेंगे is by doing some 3 simple steps. First is ask yourself, so why do you want to grow your money? Is it for your financial freedom? Is it for your security? Is it for better experiences for your family? So this is the first one. Second one is you quantify it. Matlab, instead of just saying that I want to be rich, you have to quantify it by saying I want to build a 1 crore portfolio in maybe 4 years or 5 years. So you have to set it like that. Third one is you have to visualize in the sense ये daydreaming नहीं है। विजुअलाइज करने से कुछ होता नहीं है, उसके ऊपर काम भी करना पड़ता है। विजुअलाइजेशन का पर्पस ये होता है कि हम बिफोर इवन टेकिंग द एक्शन वी थिंक अबाउट ओके दीज एक्शंस इफ आई टेक आई विल रीच दिस पर्टिकुलर गोल। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, if your goal is financial freedom, then this is how it should be. Your goal should be, I want to generate 1 lakh rupee per month as passive income by 2027. So something like this. Okay. So once you have this kind of a tangible thing, why, then it becomes easier to walk the path to achieve towards it. डेफिनेटली सर, आपने जैसे हमें एक्सप्लेन किया कि आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके थॉट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। टेंजिबल अगर आपने गोल सेट किया है और उसके मेजरेबल आउटकम आपने डिसाइड कर लिए है, तो आपको पता होता है कि आपको क्या अचीव करना है, कब तक अचीव करना है और किस जरिए से कौन सा पाथ लेना है उसको अचीव करने के लिए। अब आप थोड़ा सा वॉक थ्रू कर सकते हैं हमें आपकी आस्क ट्रेडर जो मेथोडोलॉजी है, मतलब आस्क ट्रेडर हब आपकी एक कम्युनिटी है, वहाँ पे आप अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करने के लिए कैसे हेल्प करते हैं। प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। So Ask Traders Hub में हम not only we just don't talk about just making money, we also talk about how we should do it, what is the right way to do it, what mistakes not to make, what are the things we should focus on and all that, and it is a very systematic approach towards everything. तो इसमें we have something called as a LIO formula, LIO formula. So now LIO stands for learn. So basically understand where you are currently financially, that is the learn.
Then I is implement. Set short term and mid term goals for implementation, and optimize. Optimize is nothing but you track it, you adjust it, and refine it over time. So this is the Leo formula. What we we discuss and what we learn in our community. Abhi, just to break it down practically. Okay, so short term matlab kya hai? Is anything between 0 to 1 year. तो इसका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है that you want to build an emergency fund, and to do that you will start investing rupees 5,000 rupees per month and clear your all your this credit card का जो होता है debt, तो वो clear करेंगे. So that is the short term goal. Now mid term goal is anything between 1 to 5 years, which can be like the goals can be to save for your down payment for your house, or build a trading portfolio, or to achieve consistent profits in the stock market or the financial markets. ये mid term goal हो सकता है between 1 to 5 years, and long term goal होता है is anything above 5 years. So which can be, the goal can be to achieve financial freedom, building 2 crore corpus amount, and to generate passive income. So these are the framework what we discuss about. So Leo formula is the answer for your question. तो आपका ये LIO लियो फार्मूला जो है वो आपके कम्युनिटी को आप सिखाते ही है और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं. अब यहाँ पे मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग फाइनेंशियली थोड़े इनडिसिप्लिन होते हैं. मतलब जैसे जनरली बोला जाता है कि आपके पास इनकम आया तो आप पहले सेव करो, उसके बाद स्पेंड करो. लेकिन काफ़ी लोगों को खुद को कंट्रोल वो रख नहीं पाते हैं. पहले वो स्पेंड कर लेते हैं, उसके बाद बची कुछ अमाउंट वो सेव करने के लिए ट्राई करते हैं और उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, फाइनेंशियल गोल्स भी बिगड़ जाता है. तो ऐसे लोगों को आप किस प्रकार से ट्रेन करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं आपकी कम्युनिटी में? थोड़ा मतलब अगर आप कोई भी आपकी कम्युनिटी में एंटर करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट मैसेज होगा. Yes. So this is a wonderful beginning, wonderful start. तो इसमें है ना, ये जो गोल्स सेट करने के टाइम पे है ना, गोल्स सेट करने के टाइम पे रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है. ओके, सो रियलिस्टिक का एग्जांपल ये है, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है या ट्रेडर्स हैं, they start by setting some extreme targets. Like for example, I want to make 100% returns in 3 months. Now this is very unrealistic. Okay, so especially for a new person who is coming into this without having proper training, proper skill, this is very unrealistic. So unrealistic होने से क्या होता है, वो achieve नहीं होता है, and once it is not achieved, it leads to frustration, and frustration leads to emotional decisions, and again they come back into the same cycle that they start worrying that okay, even I'm putting my efforts but I'm not growing much. So this is the problem. तो इसका आंसर ये है कि we should work on something called as SMART goal setting, SMART. Now SMART stands for specific, measurable, achievable, relevant and time bound. ये होता है SMART framework, और I would like to give you very specific examples about how we can do that. So specific कैसे करेंगे? Instead of saying I want to make money in trading, what you have to set is I want to generate 15% annual return by following a disciplined strategy. This is a example for being specific. Now measurable is like you should track your portfolio growth and your savings and your cash flow. जो भी आपका इनकम होता है और एक्सपेंसेस होता है उसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है. So that is how it will become measurable. Then achievable, set a realistic target for investing depending on your income source. It can be 10,000, 20,000, 30,000 based on your income, but invest करने के लिए this much I will dedicate it separately करके you have to do it at the beginning of the month. As soon as your salary comes, जैसे आपने बोला, instead of spending and then investing, I will not even say saving. Okay, saving करने से कुछ होता नहीं है. You should start looking at investing. So you set a realistic goal that okay, based on my income, this much I will keep it aside for investing. And the third one is relevant. See, relevant matlab all your goals should align with your lifestyle and what is that you want to achieve. So it also means that you will balance your risk along with security. And then time bound is
of course, it comes with in the statement itself. You have to set very clear deadlines. That one example is achieve 10 lakh savings in 3 years. Okay, something. This is one of the example. So ये है smart framework, and once you set this particular thing, regularly you should review it, adjust it, and depending on the changes in the scenario, changes in the situation and all that, you should be flexible enough to tweak all these things. So this is the way we talk about setting the goals. यस डेफिनेटली सर, आपने गोल सेटिंग के बारे में थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच हमें बताया जो प्रैक्टिकल भी है, एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि आस्क ट्रेडर हब के लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब दो चीज़ें होती है, आपके गोल सेटिंग हो गया और दूसरा एक प्रैक्टिकल रिस्क टॉलरेंस हो गया। अगर हम दोनों को मैच नहीं कर पाए तो आपके फाइनेंशियल गोल्स जो है वो टॉस हो जाते हैं। तो आप ये जो रिस्क टॉलरेंस है या फिर हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, उन दोनों को बैलेंस करने के लिए कैसे आपके कम्युनिटी मेंबर्स को हेल्प करते हैं, और उसके लिए कोई टूल है आपके पास जो आप लोगों को देते हैं असेस करने के लिए रिस्क कंफर्ट को? Yeah. See, it's not like some physical tool or something. It can also be looked at as a system. Okay, so just to make it very clear, you have set your goals. Okay, but a goal without a system is just a wish. Okay, so to make it to realize that goal, you have to have some kind of a system. So what we emphasize at Ask Traders Hub is a system-based wealth creation instead of taking refuge in your emotional decisions. So your financial growth system, okay, if we can talk about it as a tool which can be called as a financial growth system, it should include these following things. First thing is, you should automate your savings and investments. How can you do that? Is by setting up your SIPs for monthly investments, so that एक बार आपने set कर दिया तो as soon as your salary gets credited, it automatically goes. Okay, so that is one. Then you should always budget your whatever money you have. Like for example, one of the simple tricks I can tell you is you can follow this 50-30-20 rule. So 50-30-20 rule का मतलब ये है 50% for your needs. Okay, for running your day-to-day expenses, your house, running your house, paying your bills and all that. That is 50% of your income. 30% for your wants. Now wants are like all your entertainment, जो भी purchase करने का है, shopping, that, this and all, you can do that. And 20% should go into your savings and investments. So this is how you budget. And then the third one is you should have a disciplined approach towards investing and trading also, because if you are into trading, then I must say that if you don't have a predefined strategy, then you will end up making impulsive trades and you will end up losing your capital. So this is what happens. And the last one system, what I can tell you is you should always have this thought that you build multiple sources of income. You cannot depend on a single source of income. Let it be your salary or let it be your single business income. You cannot. You have to have multiple sources of income. So how can you do that is, you can diversify between your salary, then you can do your, returns from your real estate investment, or you can do a kind of a side business or something like that. And this is how you should diversify. So just to show you or explain to you one of the practical ways of doing it is, if your goal is to kind of invest 5 lakhs or create a 5 lakh corpus in the next 2 years, what you have to do is you can set up an SIP of 20,000 rupees per month, rather than relying on one lump sum investment late into the future date. So this is how I think we should approach this as a systematic wealth creation approach. सर, जैसे आपने बताया कि रिस्क टॉलरेंस के साथ साथ आपको आपका सिस्टमेटिक अप्रोच भी मेंटेन करना चाहिए। अभी मैंने सुना था कि जो रिच लोग होते हैं, बिलियनियर मिलेनियर लोग होते हैं, वो डेली बेसिस पे अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं या फिर उसको असेस करते हैं। तो आप हमें ये एक्सप्लेन कीजिए हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू असेस और रिव्यू आवर फाइनेंशियल गोल्स ऑन डेली बेसिस, या फिर हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू कैलकुलेट योर नेटवर्थ सो ऑफन,
so that we can maintain our financial stability. Yeah. See, daily review करने का कोई मतलब नहीं है. You should have a set system which can be either monthly or every quarter or once in a 6 months. So this should be the time when you should review it. And वो भी ऐसा नहीं है कि everyday जाके आपका portfolio check करो. All that it only adds to the emotional confusion. वो सब नहीं करना चाहिए. What we should do is we should align our goals with our risk tolerance. Okay, so most people गलती क्या करते हैं is that they set very aggressive financial goals without assessing their risk appetite. And once their portfolio is down, they panic and they come out in a loss. So this is all psychological things which happens, which should be avoided. So how should we align our goals with risk is, it is very simple. If you are, if you prefer low risk, you should prioritize investing into safe investment, products like your fixed deposits or bonds or index funds or something like that. If you have a moderate risk-taking ability, you should, explore something called as swing trading in the trading and investing में ETFs में आप invest कर सकते हैं and mutual funds. And if you are aggressive and थोड़ा risk taking ability आपका ज़्यादा है because you are at a younger age, then you should consider trading as an additional source of business income. You can also try different kinds of trading which is there to add as your additional source of income. So this is the way it is. And जैसे आपने बोला, what I personally recommend is a day to day, I mean, just to give you an example, देखो January शुरू होता है तो everybody sets an goal for this year, but what happens by the time they come to March, it's all forgot. So what I personally recommend is you should always look at it from a quarterly financial checkup. So what you can do is, to track the progress, what you can do is you can do your monthly reviews. You check your savings, you check your trading performance, and you check your budget. This is what you can do. Quarterly adjustments में आप क्या करेंगे, that did you meet your short-term goals? That is what you have to ask yourself. If not, you have to adjust your strategies. That is the second thing. And annual goal revisions, which we can do as your income grows, increase your investments accordingly. So this is the way which, I would suggest that everyone should track and adjust their goals regularly. अब मेरा फाइनल सवाल जो है वो आपके लिए ये है कि देखिए, हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया, सारी कंसेप्ट्स आपसे भी सीख ली, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट ये एक कम्युनिटी से जुड़ जाओ. फॉर एग्जांपल, आपकी आस्क ट्रेडर हब कम्युनिटी है. यहाँ पे लोग कम्युनिटी के साथ जुड़ के, लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ के नई नई चीज़ें सीख रहे हैं और एक ऑटोमेटिकली एक सोशल प्रेशर बनता है डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए. तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कितना इम्पोर्टेंट ये है और आपको कितना फ़ायदा होगा कम्युनिटी से और हमारे ऑडियंस को कितना फायदा हो सकता है? Yeah, so see, it is very simple. It is not about joining my community or some other community. This is a universal truth. Your character and your growth is defined by the company you keep. Okay? So if you want to be progressive, you have to be friends with progressive people. If you want to learn some new skill, you should be a part of a community wherein they teach this skill. So this is the thing. Okay, so जैसे पहले our parents used to say, तुम्हारा, हिंदी में वो कहावत है ना कि आपका संगत का असर. Okay, so संगत का असर, definitely it plays an important role. So that is why a community model is something Ask Traders Hub stands for. So one of the biggest reason, what I can tell you that people fail in financial planning is that they lack support. Now when you are alone and you don't have your trusted people to go and discuss, okay, so what happens is it is very easy to make emotional decisions. You abandon your goals and also you get discouraged. So that is why Ask Traders Hub is a platform wherein we meet with the community members on a regular basis every week, and we discuss on the updates, different strategies, what can be adopted
and we also do a live question and answer session wherein we try and solve all their concerns and all their doubts, let it be towards investing or towards trading. And community में ऐसे लोग हैं where people are very serious about their trading and investing. Okay, so this gives you a platform wherein you can connect with like-minded people, and it also gives you access to tested and proven financial frameworks. Okay, so all I can say is surround yourself with the right people who push you forward, who push you towards success, and you can always join such communities for your own benefit. डेफिनेटली सर, अभी एक लास्ट आपका मैसेज लेने से पहले मैं अपने ऑडियंस से बताना चाहता हूँ, ऑडियंस, अगर आपको एक अपना सिक्योर्ड फाइनेंशियल फ्यूचर चाहिए तो सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप आज आपके लिए है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और सर का जो अपकमिंग जो फ्री वेबिनार है उसमें आप ज्वाइन करके अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। सर, एनी लास्ट मैसेज टू आवर ऑडियंस? Last message to our audience is very simple. Don't wait for right time to come. Start today, because as far as investing is concerned, the earlier you begin, it is better. So don't wait to think that okay, मेरा अगला increment आएगा तो मैं अपना investing शुरू करूंगा and all that. It doesn't work like that. Start with whatever you have, even if it is a small amount. The main point here is start developing this discipline of investing regularly, because that is the only way you can grow your wealth. Okay, saving करके कुछ होने वाला नहीं है. You have to start learning to invest according to your risk appetite and depending on what is that you want to achieve. So define your goals, implement those strategies, and just watch how your financial freedom will transform. So all I can say is, if you need more guidance, please do join us for our free webinar, which happens every alternate weekends. You can come there, and we will be glad to share with you the concepts, what we discuss, and what Ask Traders Hub stands for. So this is my message for all of you. And see, it's all about growing together. ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे ही सब पता है नहीं. मैंने भी बहुत साल लगाए हैं ये सब सीखने के लिए. तो Ask Traders Hub में हमारा ये, this is our intention that all these things can be shared in a very structured way and an easy to understand way, so that people can take the benefit and create something meaningful for them and their families. तो ऑडियंस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी सजेशंस है या फिर डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको जरूर आंसर मिलेगा। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में नीचे जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और सर के आने वाले वेबिनार को ज्वाइन कीजिए, विच इज टोटली फ्री फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद किरण जी।